Hello student, good morning all of you. Now I start chemistry lecture and yesterday I have taught about D block elements. Some introduction about D block. Okay now? Now today we'll teach about D block, some concept of D block and इंट्रोडक्शन ऑफ ए ब्लॉक. ओके ना? तो कुछ हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पॉइंट्स अभी रह गए थे, उस पॉइंट्स को हम अभी देखते हैं. ओके, तो बहुत सारा पॉइंट्स हमने लिखवा दिया था, अब सम पॉइंट्स राइट डाउन करेंगे. हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक. नाउ हेडिंग इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक. हेडिंग इज दैट properties of D block. Properties of D block. Properties of D block elements. Now first point is that it is very hard metal. It is, write down, it is very hard metal. It is very hard metal. And next point लिखना, it has ductile and luster. It has ductile and luster. It has ductile and luster. Do you know now what is ductile and luster? It is very hard metal and it has ductile and luster. Okay, now third point, it has high MPBP, melting point. It has high melting point and boiling point. Okay, next point is that it has high melting point and boiling point. It has high melting point and boiling point. MP, melting point and boiling point. Now next point is that fourth point. Fourth point is that it has variable oxidation state. It has variable oxidation state, जो कि कल लिखवाया भी था. It has variable oxidation state. Point number 5, it act as a catalyst. 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 Now next point, it act as a catalyst. ये कैटलिस्ट क्या काम करता है? रिएक्शन को उसकी स्पीड को बढ़ा देता है. तो नाउ कैटलिस्ट की तरह MnO2, आयरन, ठीक है, बहुत तरह के प्लेटिनम का प्लेट जो हाइड्रोजन गैस को ऑब्जर्व करता है, तो बहुत तरह का जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट it is good conductor of heat and electricity. It is good conductor of heat and electricity.
It is good conductor of heat and electricity. Now next point is that it show color in a solution. सॉल्यूशन के अंदर ये कलर शो करता है, मालूम होगा आपको CuSO4 ब्लू कलर दिखाता है, इट शो कलर. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आगे हम देखेंगे. इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ओके ना, लाइक K3FeCN6. This one is called complex compound. Iron form complex compound. Iron form complex compound. Iron form complex compound. So many D block elements form complex compound. Now next point is that its oxide form basic solution. Its oxide form basic solution. Basic solution like FeO. एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जेडेनो. जेडेनो इज एम्फोटेरिक. जेडेनो इज एम्फोटेरिक. जेडेनो इज एम्फोटेरिक. Okay now, okay, 9 point is completed. Now we go for D block, sorry A block. D block is completed. हमने कल आपको D block का सारे इंट्रोडक्शन दिया था, आज प्रॉपर्टीज हमने बताया. व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ D block. Okay now next point is that A block. लास्ट ब्लॉक इज दैट ए ब्लॉक. हमने इस ब्लॉक, देन पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक के बारे में देखा, एंड लास्ट इज ए ब्लॉक. राइट डाउन हेडिंग ए ब्लॉक, इंट्रोडक्शन ऑफ ए ब्लॉक. राइट डाउन हेडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ ए ब्लॉक. इंट्रोडक्शन ऑफ ए ब्लॉक. इंट्रोडक्शन ऑफ ए ब्लॉक. यस ना. पहले आप देखो पीरियोडिक टेबल में दिस वन इज एस ब्लॉक, दिस वन इज पी ब्लॉक, एंड दिस वन इज डी ब्लॉक, एंड एट द बॉटम लेयर हियर 58 to 71 and 89 to 103. Okay now, here 58 to 71. Write down.
ओके, ध्यान देना आप, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां पर स्कैंडियम है, उसके नीचे वाइट्रियम, वाइट्रियम के नीचे लैंथनम, लैंथनम के नीचे एक्टिनम। लैंथनम हैज एटॉमिक नंबर 57. लिसन हियर, lanthanum has atomic number 57 and actinum has atomic number 89. Lanthanum has atomic number 57 and actinum has atomic number 89. Okay, now listen carefully. Lanthanum and actinum both are d block elements. ओके ना, कल मैंने आपको बताया था बोथ आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, नॉट ए ब्लॉक एलिमेंट्स. लैंथनम एंड एक्टिनम विल बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, नॉट ए ब्लॉक. आफ्टर लैंथनम, ओके, आफ्टर लैंथनम सीरियम, सीई, आफ्टर लैंथनम सीरियम टू LU. That means 58 to 71 we write at the bottom, and 51 to 71 all elements lie in that box. Study I have explained. 57 to 71 all 15 elements lie in that box, and 57 belongs to D block and 58 to 71 belongs to A block. Why it is called A block? Now 58 बोले तो सीरियम, and last element of lanthanide series, that is LU. Okay, 71. Now इस बॉक्स में कहां से कहां तक रहते हैं? ला से लू तक, लालू 57, ला से लू तक, बट ला बिलोंग्स टू डी ब्लॉक. इस बॉक्स में लालू रहते हैं, LALU, LALU, but 57 belongs to D block and cerium, CE, cerium belongs to A block. Now 58 to 71 belongs to A block, or that is all properties will match with lanthanum. That's why it is called lanthanide series. That's why it is called lanthanide series. That's why it is called lanthanide series. Okay, here atomic number 58 to 71 elements. Now total 14 elements. टोटल 14 एलिमेंट्स. इसके अंदर एक एलिमेंट है प्रोमिथियम, PM, प्राइम मिनिस्टर. PM इज रेडियो एक्टिव, और ये भी सिंथेटिक रेडियो एक्टिव है. दैट मीन्स मैन मेड है, लैब में बनाया हुआ है. सिंथेटिक रेडियो एक्टिव, नेचुरल रेडियो एक्टिव नहीं है, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव. सिंथेटिक रेडियो एक्टिव, PM, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रोमिथियम है. ओके ना, सिंथेटिक रेडियो एक्टिव. बाकी जो होते हैं वो नॉन, रेस्ट जो होते हैं नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, वो रेडियो एक्टिव नहीं होते. रेस्ट विल बी नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव. Now next point is that it is called lanthanide series, and it is called also called first inner transition series. It is also called first inner transition series. First inner transition series. That is called first inner transition series. क्यों? ये जो है ये ट्रांजिशन सीरीज है डी ब्लॉक, उसके अंदर से निकला हुआ है ये, तो फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज. ओके ना. नाउ
Next, it is also called 4f series. 4f series. Why it is called 4f series? Because last electron filled in 4f subshell. 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 That's why it is called 4f subshell. That is also called rare elements. लिख लेना, that is also called rare elements. That is also called rare elements. Okay. Now next point is that electronic configuration. Electronic general electronic general configuration. General configuration. General configuration is that n is 2 n minus 1 d 0 to 1 and n minus 2 if 1 to 14. 1 to 14. Now I will explain where n belongs to. N equal to 6 and 7. 6 and 7. If we put 6, then it will be represent lanthanide series, and if we put 7, then it is represent actinide series. So lanthanide and actinide both have same general configuration. Like that, ns2 n minus 1 d1 0 to 1. I will explain how it is come general configuration. Okay now? So I will explain once again. I will explain F block lanthanide series from cerium to Lu. C to Lu. Cerium is first element of lanthanide series. F block series, otherwise lanthanide series. Write down. Cerium is first element of lanthanide series or a block elements. First element of lanthanide series or a block element. A block element. Okay now once again I repeat, cerium to Lu. It is known as lanthanide series. Point number 1. Its atomic number belongs to 58 to 71. Point number 2. Total 14 elements lie in that period, in that box. That is also called फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. पॉइंट नंबर 4. एक इसके अंदर एलिमेंट है पीएम. ओके, इसके अंदर एक एलिमेंट है पीएम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 61. पीएम है 61. प्रोमिथियम. ये सिंथेटिक रेडियो एक्टिव है. पॉइंट नंबर 5. Rest will be non-radioactive. Point number 6. Okay now 7th point. It is also called 4f series because last electron filled in 4f. Point number 7. Point number 8. General configuration is ns2 n minus 1 d 0 to 1 n minus 2 f 1 to 14. I will explain how it come. Point number 8. Now point number 9. Point number 9 is that first element of lanthanide series is cerium, Ce. Now point number 10.
It belongs to 58 to 71. It belongs to group number 3. Now it belongs to group number 3. Okay, it belongs to group number 3. Now point number 10 is group number 3. Group number 3. In Roman it is called third B. Third B. Group number is third or third B. Group number is third or third B. And period number, point number 11. Point number 10 and point number 11 is period number. Period number is 6. Period number is 6. Okay na? Now remember or care on 11th point. Okay na? Write down what is amphoteric. Okay, amphoteric आप जानते हैं ना? Now someone has doubt what is sir amphoteric. Okay, I will explain. Listen here. What is acid? Acid base. Amphoteric. Listen here. What is amphoteric? Amphoteric मतलब that means वो अपने आप को एसिड भी समझता है और अपने आप को बेस भी समझता है. मतलब it act as acid as well as base. It act as acid as well as base. उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक. एग्जाम्पल लेते हैं HCl प्लस ZNO. ZNO इज एम्फोटेरिक बट HCl इज एसिड. अगर यहाँ एसिड है तो ZNO एम्फोटेरिक है. दैट मीन्स एक ऐसा बिहेव हो जाएगा बेस की तरह, बन जाएगा ZnCl2 plus H2O. Now if NaOH plus ZNO, here NaOH act as a base. Okay na? Here NaOH act as a base. Now ZNO act as a acid. Acid मतलब that means not release H plus. एसिड का डेफिनेशन और भी होता है, आगे हायर क्लास में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन. एसिड का मतलब केवल H+ को लूज करना नहीं होता है. तो एसिड एंड बेस, दिस वन इज एक्ट एज ए बेस बिकॉज NaOH इज 100% बेस. ओके ना? ये एसिड ये होना ही होना है, इनका डुअल कैरेक्टर नहीं होता है, बट ZNO का डुअल कैरेक्टर होता है. ये बेस है तो अपने आप को एसिड बोल देगा और फॉर्म बन जाएगा ZnOH होल ट्वाइस प्लस वाटर. Okay now? Now here HCl, then ZNO act as a base. Here NaOH base, then ZNO act as a acid. In that reaction ZNO act as a base and in that reaction ZNO act as a acid. That means ZNO has dual character. Sometime it behave like base and sometime behave like acid. Okay now? That's why it is called amphoteric. Now definition is clear now, all student? Doubt is that Vikram Singh. Definition clear or not? Okay, write down. So we have take care on lanthanides is 1 to 11 point. This one is point number 11, period number 6. Okay now? Point number 11, period number is 6. So 1 to 11, please take care. Okay?
राइट डाउन हुआ, यस और नो? हटा दूं मैं इसको? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एक्टेनाइड सीरीज। एक्टेनाइड सीरीज, राइट डाउन हेडिंग एक्टेनाइड सीरीज। Next point is that actinide series. Actinide series. First element is that thorium, TH. Thorium has atomic number 90, and last element is that Lr. Atomic number is 103. Okay, now it start from actinum, but actinum is D block elements. Please take care here and listen carefully. Actinum is D block element, not F block element. This one is D block element, and this one is from 90 to 103. That is actinide series. Actinide series. All properties match with actinide. That's why that elements is known as actinide series from atomic number 90 to 103. Okay now, and it has 14 elements. 14 elements. All are radioactive. All are radioactive. All are radioactive. सारे रेडियोएक्टिव होते हैं, बरोबर है। और इसी के अंदर मैं बता दूं, यूरेनियम इसी के अंदर आता है। थोरियम के बाद पीए, पीए के बाद यू, यूरेनियम जो मैडम क्यूरी ने दिया था हमें। तो ऑल आर रेडियो एक्टिव। ओके, नाउ इट इज कॉल्ड सेकेंड inner transition series. Now it is called second inner transition series. Okay, now it is called second inner transition series. Now next point is that it is also called 5F series. It is also called 5F series. Why it is called 5F? Because last electron filled in 5 subcell. Last electron filled in 5F subcell. Last electron filled in 5F subcell. That's why it is called 5F series. Okay now? That's why it is called 5F series. Now next point is that it has general configuration is NS2 N-1 D 0 to 1 and N-2 F 1 to 14. 0 to 14. Yeah, 1 to 14. Now N belongs to 7. For lanthanide series N belongs to 6, or for actinide series it belongs to 7. 1 to 14. This one is F. General configuration is NS2 N-1 0 to 1 F N-2 F 1 to 14. It is called general configuration. Now next point is that
It lie in group number 3. Group number 3. And in Roman it is called third B. And period number is 7. Period number is 7. That means actinide series belongs to period number 7. Okay now? It belongs to period number 7. Now listen carefully. Point number 1. Lactanum is D block element. 90 to 103. It is A block elements, and it is also called actinide series. It contains 14 elements. All are radioactive. It is also called second inner transition series. It is also called 5F series, and general configuration is NS2 N-1 D 0 to 1 N-2 1 to 14. Now group number 3, third B. Point number 10. Period number 7. Okay now? Now आप इसको राइट डाउन कीजिए. तो आपको मैंने एस ब्लॉक टीच किया, पी ब्लॉक टीच किया, डी ब्लॉक टीच किया एंड ए ब्लॉक टीच किया. इंट्रोडक्शन, एज ए इंट्रोडक्शन. ओके. और मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखाया. ओके. इतना. अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. ओके. कोई डाउट? हैव यू एनी डाउट? देन टेल मी. अदरवाइज थैंक्स टू ऑल. ओके. नो थैंक्स. सॉरी. No doubt. Aniket, thank you sir. Shikhar, no doubt. Shruti, no doubt. Suhani, no doubt. Brijesh, raise hand. हाथ उठाओ, बोलो डाउट. What is van der Waals force? I will explain later. Van der Waals force मतलब van der Waals force. Van der Waals force is applied between two non-polar compound. Write down. Van der Waals force. Van der Waals force. This is a one type of force that will be applied between two non-polar compound या molecules. Two non-polar molecules. अब next question is that what is non-polar? That will be problem. But लिख लेना. Force of attraction between two non-polar molecules like iodine. Iodine is non-polar. Iodine is non-polar. Then van der Waals will applied. Okay now. O2 is non-polar. O2 is non-polar. Then van der Waals force will applied. Fluorine and chlorine. Sorry, fluorine. Van der Waals will applied. Chlorine and chlorine. Van der Waals will apply.
मतलब intermolecular force. This one is type of a intermolecular force. Write down. Van der Waals force is a type of intermolecular force. दो molecules के बीच में लगने वाला force. Van der Waals force is intermolecular force. Okay ना? And van der Waals force will depend upon mass. When mass will increase, van der Waals force is also increase. तो 3 पॉइंट लिखना है. Van der Waals force is a intermolecular force and it is applied between non-polar and non-polar, and it will be increased when mass of element will increase. That means F2 और F2 के बीच में van der Waals, Cl2 और Cl2 के बीच में van der Waals, Br2 और Br2 के बीच में van der Waals, और आयोडीन और आयोडीन के बीच में van der Waals. और van der Waals का स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होगा? van der Waals का स्ट्रेंथ आयोडीन में ज्यादा होगा, क्योंकि आयोडीन में मास ज्यादा होता है. इसीलिए जब आयोडीन का van der Waals ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई आयोडीन के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? क्लोज टू ईच अदर, और ये सॉलिड बन जाएगा, और ये लिक्विड होता है. सॉरी, और दिस वन इज गैस. तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन एग्जिस्ट इन गैसियस फेज, ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज, एंड iodine exists in solid phase due to a strong intermolecular force, that is van der Waals force is applied between iodine and iodine. That's why molecules become close to each other and it convert into solid state. Okay now? Okay, thanks to all.